Act 1948. So already we have discussed Factory Act 1948 having 11 chapter and 120 sections. Out of 120 section and 11 chapter, we are there in the chapter 1, and chapter 1 relates to important definition. Chapter 1, section 2, right? Section 2, and as per the Factory Act 1948, chapter 1, section 2. A, it relates to section 2A, it relates to adult. Section 2B, adolescent, already we had discussed. Section 2C, child. Section D, young person. Day, week, power, prime mover, transmission machinery, and manufacturing process. Already we have discussed, these are the factors related to Factory Act. Manufacturing process, if you will go through the books, one list is there that designed by the Indian Constitution, what it includes related to the manufacturing process. Still, manufacturing process means, in a simple sense, we can say it is the activity of in the production area, in a manufacturing area, where the activity starts from raw materials of finished good, right? Then after we will discuss worker. Worker, the section 2I, it relates to what do you mean by worker. As per the Factory Act 1948, section 2LL, section 2L define who is a worker. Worker means a person, but worker means a person who is working directly or through a contractor. Workers means a person who is working directly or through a contractor with or without the knowledge of the principal employer, whether remuneration or not, in any manufacturing process must be carried on. It means what? See, as per the Factory Act 1948, worker is a person. Worker manela gote loko. Suppose me is a worker. I'm working a factory. Means what? I'm working a factory. Mujo factory kamo karuchi. Maybe I'm working there directly or through a contractor or through any agency or agent or agency, including contractor. Mu directly asi kamo korthai pare. Nale konosi mu agency through, agent through, contractor through, asiki kamo korthai pare. With or without knowledge of the principal employer. Principal employer ke? Who is the principal employer? Principal employer means the occupier, the ultimate controller over the factory, the owner of the factory. Principal employer mate jani thai paranti, mate jani no thai bi paranti. Suppose I'm working directly and at that particular factory, then mate principal employer jani thai paranti. If I'm working through a contractor, then mate principal employer jani no thai paranti. Right? With or without knowledge the principal employer, whether remuneration or not. Remuneration mo pau thai pare. Remuneration means what? Wages. Whether workers kon panti? Wages. Employees kon panti? Salary. So it hame workers discussion korche. So workers getting wages. With or without the kon kahilaiti, whether the remuneration or not. Remuneration mo pau thai pare means wages pau thai pare. I'm working, the organizer, the factory may be providing wages to me, or maybe may not be the wages, may not be the remuneration. Ta mane kona? Mu wage no pai ki kemti kamo karibi seiti? Mu mate factory wage doni. Ta mane mu kon jai ki free re kamo karibi? Is it so? No. Maybe I'm a person, maybe I'm working there for remuneration, the factory providing wages, maybe cash or maybe kind. Mate cash de thau pare? It means the wage de thai pare, kaisa kare, or else mate kon do thai pare, kind re mu kamo kor thai pare. May or may not be kahilati remuneration. Ta mane mu free re to kamo karibini, mu kind re kamo karibi. Kind mane kona? Kind mane hela, dharo se factory kichi gote activity hochi. Activity kona? Dharo se factory wheat, it is a wheat factory. Suppose mu example re gote nochi. Now it is a rice factory. Hela, rice factory or wheat factory or any kind of oil factory or any kind of seeds factory. To se mate kon karibo? Say seeds ru, say wheat ru, or say rice ru, mate kichu pariman re de dabo. That is the kind.
जो एक्टिविटी सैठी होची सेटा हला काइंड आकारे काइंड माने हला कि दया एठी नुह काइंड माने आमे एठी कहबानी कि विदाउट रेम्युनरेशन माने आमे कहबानी कि मते किछि से फैक्ट दबोनी मु फ्री रे काम करी सेटा भी नुह विद और विदाउट कोन कहला एठी whether remuneration or not remuneration देई पारे न देई पारे may it means I will work there it may be cash or it may be kind but if any manufacturing process जोटा कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस माने हम कोन कहली इट इज अ लिस्ट जोटा कि हमें कहबा काय मैन्युफैक्चरिंग दिस इज अ लिस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जोटी कोन काम होतबो इट मस्ट बी मेकिंग अल्टरिंग रिपेयरिंग ऑर्नामेंटिंग फिनिशिंग पैकेजिंग ऑयलिंग वॉशिंग क्लियरिंग देखो कितने बड़ गोटे लिस्ट है ए सब काम किछि भी गोटे एक्टिविटी सैठ होतो एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी मस्ट बी देयर इन दैट पर्टिकुलर एरिया एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मस्ट बी कैरिड आउट ए सब जदि सिचुएशन थिबो ताहले आमे ताको कहबा कोन वर्कर as per the factory act 1948 section 2L चलो नेक्स्ट असला कोन व्हाट डू यू मीन बाय फैक्ट्री वर्कर पढिलो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पढिलो वर्कर पढिलो नाउ लेट्स वी विल डिस्कस द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्ट्री देखो स्टूडेंट्स तुमको के पचारिबो कोउठी भी anywhere somebody will ask you the question in which section factory is defined को सेक्शन रे फैक्ट्री डिफाइन हेची तो कोन कहबो पिला माने को सेक्शन रे फैक्ट्री डिफाइन हे 2M of Factory Act 1948 वेरी नाइस ठीक है so as for the Factories Act 1948 section 2M defined what do you mean by factory आकु जमार भूलिबेनी A B C D E F G H अनुसार M रे अछि हमर फैक्ट्री हैला तो what do you mean by factory how we can define factory means any premises gote premises it including everything means start kariba kotu gate ru खाली हमें premises माने खाली बिल्डिंग टा को नबानी बिल्डिंग टा को खाली कि फैक्ट्री हमें कहबानी नो सेटा पूरा स्टार्ट हबो गेट रू हमर से गेट रू जत्ते सब हमर एरिया अछि से भितरे से सब आगो जब हमर फैक्ट्री भितरे it is any premises where and 10 or more workers are working केते जना काम करछंती 10 जना कि अधिक लोक 10 or more than 10 workers are working on any day को भी दिन any day of the preceding 12 months preceding and following preceding माने धरंतु हमरे ना को मंथ हला हमरे ना हला धरंतु जून हला जून रु लास्ट जून रु ए जून भितरे 1 year आमे गले 12 months last 12 month को so preceding 12 month any day को भी दिन रे हमर केते जन काम करथिबे 10 जन लोक हला any part of the manufacturing process with the aid of power त माने एठी कोन कहआ गेला पावर माने मु कोन कहितली पिला माने आपण मानकू व्हाट डू यू मीन बाय पावर पावर रे डेफिनेशन कोन एठी स्टूडेंट्स electricity इलेक्ट्रिकल एनर्जी and electrical energy इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेरी गुड तो एठी हमें कोन कहिले आको ध्यान रे बुझिबे गोटे फैक्ट्री हमें काहा को कहबा इट इज अ प्रीमाइसेस पूरा एंटायर एरिया को हमें कवर करबा where 10 or more persons are working 10 जन रु अधिक लोक काम करथिबे एनी डे को भी दिन 10 जन काम करथिबे प्रीसीडिंग 12 मंथ भितरे गोटिए भी दिन 10 जन काम करिथिबे गोटिए भी दिन 10 जन काम करथिबे जोटी के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस थिबो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रो लिस्ट ऑलरेडी देखैछि जोटी के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस थिबो विथ एड ऑफ पावर थिबो पावर माने इलेक्ट्रिकल एनर्जी थिबो जदि एस्ती एक्टिविटी हेथिबो 12 मास भितरे सेही पर्टिकुलर एरिया रे गोटिए भी दिन ताको फैक्ट्री बोली हमें डिफाइन करबा ता परे जदि 10 जन कम विद इन 1 ईयर मोर लेस देन 10 एम्प्लॉय थिबे तल सेटा को फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन हे फैक्ट्री बोली हमें ना हमें फैक्ट्री बोली कहबा नाही फाइन अच्छा एडी आइडिया गुटे मु कहबी डाउट देखो तो गोटे दिन भी 10 जन काम करछन हला वन डे एडी हमें कोन कहले एनी डे को आ जाईछि गोटे दिन करछन ता पर दिन कोन हेछि ताको कमी कि 8 जन हे जाइछन हला ता पर दिन सेटा को हमें फैक्ट्री बोली कहबा ना कहबानी ma'am within 1 year if it is 10 employee then definitely this call as factory got it na
So if Okay. any day, one day, any day means if it may be the one day also. If more than 10 or more than 10 persons working in that particular area, then we can define it as a factory. If less than 10% is there, then we cannot define it as a factory. Then ta paradina maybe seta 8 জন 9 জন 7 জন ହେଇ janti, kintu ame taku factory boli once factory boli define hei gala mane seta factory re hi count habo, jota ki ei sabu condition fulfill karuthib. Hela second factor kon kahuchi, where 20 or more persons are working, 20 or more workers are working, 20 ରୁ ଅଧିକ 20 or 20 ରୁ ଅଧିକ ଜଣ କାମ କରୁଥିବେ in any day preceding 12 months, any day ହେଇଥିବ preceding 12 months ହେଇଥିବ ହେଲା, where the manufacturing process must be there with the aid of, without the aid of power. The difference between first factor and second factor, first factor it is 10%, second factor it is 20%. First ଆଉ ସବୁ ସମାନ ଅଛି, first factor it is with the aid of power, ମାନେ ସେଇଠି electrical energy ର facility ଥିବ, and second factor କହୁଛି without the aid of power, ମାନେ ସେଇଠି electrical energy ର facility ନଥିବ, but ଆଉ ସବୁ facility ଥିବ, 20 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ କାମ କରୁଥିବେ, ସେଇଠି manufacturing process ଥିବ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ବି ଦିନ ଯଦି ଏତିକି ଲୋକ କାମ କଲେ ସେଇ particular area ରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କଣ କହିବା, ଆମେ ତାକୁ factory ବୋଲି କହିପାରିବା. But ସେଇଠି power ନଥିବ, electricity ନଥିବ, electrical energy ର କୌଣସି activity ନଥିବ, ଏମିତି କୋ factory ହେଇପାରିବ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ example ଦେଲେ anyone? Ma'am, mixer, preparing mixer, chenachur. Mixer, अच्छा very good. Mixer factory ରେ ମୁଁ actually ଜାଣିନି, mixer factory ରେ electricity ଦରକାର ନାହିଁ ନା, No. ସେଠି ଦରକାର ନାହିଁ, ଦରକାର ନାହିଁ। अच्छा मैम okay पैकिंग very बेले good. तो दरकार ना। पैकिंग बोले आजिकली से जो ये आसते कौन कहे जो कैंडल वगैरह रे ये करके हाँ। पैकिंग करती, कैंडल ये रे ताको ये करके ताको पैकिंग कर दो करती से जगह रे, एग्जैक्टली ठीक ठीक. आउ ये आपण को जति नै परिबे कोन कहले जो धूपकाठीर फैक्ट्री जोटी की मशीन नथिबो से माने हैंडमेड सब काम करती, जो सब अछंती हमर गाम मानन करे सब डिफरेंट डिफरेंट एसोसिएशन मिसी की करती गोटे गोटे एरिया रे, जदि आपण कहबे किछि बॉडी पापड़, हाँ। गारे में हाँ। बहुत जिंस हुए एमती जोता हमें हाथ रे तयारी करू, सेगुडा Yes, सब तो भी सेठी भी तो handmade दरकार हुए। कौन जे हमर ओरमास देखिथिबे हला, जो सब गां मानकरे कवर हुए, हां सेठी सब बॉडी पापड़ जते सब हैंडमेड जिंस सब थिबो, से सब आगो से माने करंती से एरिया रे सब ताको फैक्ट्री कहा जिवो. आउ देखिबे आको भी फैक्ट्री डिफाइन करा जायछि विदाउट एड ऑफ पावर, कोडी कहले आपनकर से सब मेल्टिंग हुएनी कोन एल्युमिनियम वगैरह सब मेल्ट करंती, मेंचे लोक रही कि सब डिफरेंट एक्टिविटी करंती एल्युमिनियम वगैरह रे, सो से सब जो सब काम आगो सब फायर रे हुए, सेटा को गोटे फैक्ट्री कहा जाय, ताको कोन गोटे त नाम दिया जायछि हैला. ए सब आगो जिवो आपनकर विदाउट द एड ऑफ पावर, जो थिरे कि आपन इलेक्ट्रिसिटी रो कोनोसी दरकार नै. एइटा थिला 19 आज्ञा कोंतु इटा भाटी, हाँ वेरी गुड आंसर, वेरी नाइस आंसर. मैडम- इटा भाटी गोटे जिवो, हाँ मैडम बॉयलर जो कोंती बॉयलर जो कि माने मैन्युफैक्चरिंग रे एल्युमिनियम को जो तोड़ा जाए, हाँ 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 boiler सही जगह गोटे कहा जाए फैक्ट्री, जोटा कि कौन सी इटा भाटी है गोटे फैक्ट्री. यस, धूपकाठी फैक्ट्री जोटा कि बॉडी पांपड़ वगैरह आमे सब करछे, से सब आगे गोटे गोटे सब एरिया करछे, से सब ए सब आगला जोटा कि कोठी हम इलेक्ट्रिक जिंस यूज करने, बट से सब को फैक्ट्री वाले डिफाइन करा जिवो. एइटा थिला 1948 रो डेफिनेशन. आर टिके स्मॉल चेंज हेची पिला माने फैक्ट्री एक्ट रो डेफिनेशन रा स्मॉल चेंज हेची, किछि सब समान रहिची, किछि डिफरेंस नाही. आकु टिके चेंज करा जायछि कोन, खाली मन रखिबो दुईटा को मन रखिबो कोन ना, as per the present definition of the factory act amendment करा जायछि, instead of 10 it is 20 and instead of 20 it is 40. त माने कोन कहा जाउछि, आजि का डेट रे हमें सब समान रहइबो, द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रहिबो 12 मंथ से माने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रे काम करथिबे विथ द एड ऑफ पावर विदाउट एड ऑफ द पावर, सब समान रहइबो, किंतु डिफरेंस हैला सेठी एटा को भी मन रखिबे सेटा को भी मन रखिबे. सो से डिफरेंस हला कोन, instead of 10 20 जन 20 or more person must be there, and he 20 or more person must be there. So it 40 and more person must be there. बुझी गले ना, आकु भी मन रखिबे. एटा प्रेजेंट डेफिनेशन अनुसार. हां कोन Ma'am, when this amendment was held? this amendment 2017 I think so, as per the 2017 amendment
right? Instead of 10, 20% must be there, and instead of 20, 40% must be there. But Just ma'am, double Factory Act karaye. 1948 रहेगा ना? No, Factory Act 1948. Yes. So Factory Okay. Act 1948 ताको भूलिबेनी. Amendment ताको just change करिबे. Okay ma'am. तो मैम बेसिक रे एटा लेखा हबो ना जोटा एबे न्यू वाला अमेंडेड हेची सेटा न्यू वाला को लिखिबे. किंतु एटा को भी मन रखिबे. हैला एटा को भी मन रखिबे, एटा को भी जानी थांतो ताको लिखिबे, न्यू वाला को भी लिखिबे. हैला नेक्स्ट सिबा. Okay. Then occupier. Who is the occupier? Occupier is the person who is the ultimate controller over the factory. Factory रा occupier हमें कहा को कहिबा जे factory रा ultimate control करथबो factory को. से किए हिथिबो? से जे ultimate control करथिबे must be a company director हेइथाइ पारे. factory रा director जदि हमें company अनुसार जिबा company रा director, factory अनुसार जिबा it may be the owner of the factory, or it may be a person who is the basically jodi factory ra government under re thibo, state government under re thibo, state government habo tar occupier. Factory ra jodi central government under achi, central government must be the occupier. Factory is a private body under achi, private body must be the occupier, right? Factory jodi eta company ta, so company ra director hela tar occupier. So different person the factory ta kahara control re achi, ultimate controller ame ti gute word use kale. Occupier means a person who is the ultimate controller over the factory. Ultimate control mo kon kahile edi? Maybe the state government under, maybe the central government, maybe the private body. So ultimate control taku je control kochi se hela occupier. Got it now, dear students? Ma'am, I have a doubt. Ma'am, Kuhନ୍ତୁ. जदि जने होची factory owner, but जदि in case of tender किंबा lease से समय रे की हबो occupier? जदि कि lease ने की काम करे. एइना धरन्तु आमे कहिबा फॉर एग्जांपल मु कहिछि गोटे एटा फैक्ट्री नुह बट मु गोटे तार एग्जांपल ता जस्ट कहछि. धरन्तु एइना आपणकर गोटे जिंस माने इंडियन एयरवेज हैला. इंडियन एयरवेज को आगुरु किए कंट्रोल करथिला? इंडियन एयरलाइन को कहार कंट्रोल रे थिला? कहार कंट्रोल रे थिला? मैम इट वाज अ प्राइवेट वन. गवर्नमेंट सेंट्रल ना आगुरु सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर रे थिला. It was there in the under the central government, right? Controlling authority थिला central government. But Yes, now ma'am. Indian airline को किए कंट्रोल करछि? टाटा Air Asia. टाटा Okay, Tata. हैला. टाटा इना कंट्रोल करछि. तो एइना अल्टीमेट कंट्रोलर इंडियन एयरलाइंस ना इंडियन एयरवेज जहां भी हैला. So एइना अल्टीमेट कंट्रोलर ओवर दैट पर्टिकुलर एरिया इज अ टाटा. तो जहां हमर अप्स एंड डाउन्स जहां सिचुएशन हैला तार आंसरेबल किए? टाटा. थोड़ी ना अपन जाके सेंट्रल गवर्नमेंट को पचारिबे. हमर एइना ओडिसा रे आगुरु स्टेट हमर जो पावर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ता पावर बोर्ड ता हमर स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करथिला. ना ओडा कहा अंडर अछि? टाटा पावर अंडर अछि. टाटा पावर नै गला. तो जेते सब एना प्रॉब्लम होची आमे गवर्नमेंट आमे कोन गवर्नमेंट को क्वेश्चन करछे? आमे काहा को प्रॉब्लम करूचे? सब प्रॉब्लम के सॉर्ट आउट करछे? टाटा. तो टाटा पावर रहला. टाटा पावर रहला. गवर्नमेंट भी टाटा को कहूची ना काली पर दिन रे गोटे न्यूज़ देखिबे अपन हमर चीफ सेक्रेटरी ना चीफ पर्सन जे जने से लिखिचंती कि गोटे ट्वीट करचंती कि बहुत माने अप्स एंड डाउन्स होची जोटा कि इलेक्ट्रिसिटी सेटा गोटे माने टिके बेटर हेतिले भलो होइतांता आ टिके भलो भाबरे जदी कटि नथांता एमपी. तो ता काहा को कहिले? सी गवर्नमेंट रे पर्सन काहा को कहिले? टाटा को कहिले. काहे कि नाउ टाटा इज अल्टीमेट कंट्रोलर ओवर दैट पर्टिकुलर एरिया. अल्टीमेट कंट्रोलर आमे एठी कहले नाटा आमे यूज कले अल्टीमेट कंट्रोलिंग अथॉरिटी. ता माने नाही कि सेटा सेंट्रल गवर्नमेंट रे अछि बट ताकू आपण कंट्रोल करचंती. ता माने हम सेंट्रल गवर्नमेंट को एना क्वेश्चन पचारि जबनी. क्वेश्चन आपण यू मस्ट बी आंसरेबल. मैम. कोंतो So can we say that it may be a temporary for some years, or it may be permanent? Because no if, no permanent temporary it is not a question, not a factor. It is at that particular moment who is ultimately controlling that affairs we can call as an occupier. Okay. At that particular moment.
right? It may be the temporary period of time, it may be the permanent period of time, doesn't matter. At that particular period of time, who is controlling that affairs, that we can call as a ultimate controller and we can call as a occupier. Partnership business re, partnership farm re, gote partner ro already business ta thila, se partner पळेला, सेतेबेले controller ultimate controller थिला. हे ना आउ जन partner अछंती. Ultimate controller आमे ताकू कहबा जे थिला ताकू थोड़ी ना कहबा, जे ना अछंती ताकू कहबा partnership farm रे. Ultimate controller over the particular area. कंपनी रे गोटे डायरेक्टर थिले, से डायरेक्टर पळेले. कंपनी रे अल्टीमेट कंट्रोलर के डायरेक्टर. गोटे डायरेक्टर थिले, से रिटायरमेंट हे गले. आ गोटे डायरेक्टर इना अछि. तो अल्टीमेट कंट्रोलर के जो प्रेजेंट अथॉरिटी अछि, सीएल अल्टीमेट कंट्रोलर ओवर द फैक्ट्री. Got it na, dear students? Clear na? Yes, ma'am. Clearly, ma'am. Okay. Hela. So this is all about your definition of factory. A definition amaro na barambar सब आसीबो सब जगह रे एठी आपण माने एठी एतिकी मने रखिबे. Hela. Let's discuss the chapter 2. Chapter 2 एठी आपणकर नाही. Hela. Chapter 2 माने मु खाली कहि देबे आपण माने सुनी देबे. Chapter 2 जेमती chapter 1 है आपनकर important definition section 2A to section 2N. Chapter 1. Chapter 2 is the inspecting staff. ध्यान रे सुनिबे. Chapter 2 is the inspecting staff. एठी अछि आपनकर. Wait a moment. Chapter 2 is the inspecting staff. Inspecting staff. Who are the inspecting staff under the Factory Act 1948? In chapter 2, it covers section 8, section 9, and section 10. Section 8, inspecting staff. It means it is the appointment of the inspector, additional inspector, chief inspector, appointed by the government to control the means what? To control the factory and to control to appoint in a particular area so that person can control the different affairs of the factory. It is a section 8. Section 8. Right? Inspector, section 8. Section 9, power of the inspector. The power of the inspector, it means an inspector appointed by the state government, and the power of the inspector, it is very vast power that hold by inspector. The inspector आरो गोटे 2-4 पेज रो पावर देछि हम सेते डिस्कशन करबानी एठी हला कोन तार पावर. A person can enter any factory in a reasonable time, in a reasonable moment. A person can enter any factory. Basing on this, a person can inspect the factory. A person can inspect the factory. Suppose any kind of at the time of inspection, no, any kind of means what, unethical practice it is there, or any kind of disturbance, any kind of things it is there in the factory, then the inspector have the power. The inspector can what? The inspector, it is a power to what? Cancel the license over the factory. So the inspector can enter any moment in the factory for the inspecting whether the factory is going properly or not, what is the condition over the factory, if the factory is doing everything in a proper manner. So all those things, the inspector, chief inspector, and additional inspector, they can do this. So the cancellation of registration of the factory, the cancellation of license of the factory, the basically approval of the registration and license over the factory, it is the power of the inspector, that additional inspector, and the chief inspector, that inspectors appointed by the state government, respective state government. Notification is official. Ma'am, that inspection will be surprise visit, or it is any intimated visit for mandatory? No, both the things can be possible. Both the things can be happen. It may be the surprise visit. Yes. Without any information, without any means what, any prior notice,
the inspector can visit the factory in a reasonable time. ता माने नाइ कि धरंतु फॉर एग्जांपल मु एटी गोटे कहबी से फैक्ट्री रो के गोटे किछि गोटे कंप्लेन करछि कि किछि गोटे माने होउछि एक्टिविटी नो गोटे वुमेन कंप्लेन करछि कि गोटे चाइल्ड कंप्लेन करछि किछि गोटे मते एमती हरासमेंट करा जाउछि कि हम फैक्ट्री एमती इलीगल ये होउछि सो सही टाइम रे कोन इंस्पेक्टर कोन प्रायर इंफॉर्मेशन दे कि जेबे कि सो विदाउट प्रायर इंफॉर्मेशन विदाउट एनी नोटिस द इंस्पेक्टर कैन एंटर ओवर द फैक्ट्री बट ता माने नै कि सेटा राती 12 टारे जे कि हमें पहुंचीबा केते बेले पहुंचीबा इन अ रिजनेबल टाइम रिजनेबल हमर फैक्ट्री वर्किंग आवर जेमति कि हमें कहबा कि हमर 9 टा रु राती 6 टा हेची कि जहां हमर वर्किंग आवर ता फिक्स हेची से ड्यूरेशन भीतर हमें फैक्ट्री जाई कि पहुंचीबा विदाउट एनी प्रायर इंफॉर्मेशन एंड नोटिस and it is the power of the inspector if such kind of things it is there then the inspector can cancel the license registration of the factory सेटा तार कैपेसिटी अछि सेति के पावर देई स्टेट गवर्नमेंट इंस्पेक्टर एडिशनल इंस्पेक्टर एंड चीफ इंस्पेक्टर को बट आमे जदि धरतो हमर किछ गोटे इंस्पेक्शन करिवार अछि ऑफिशियल इंस्पेक्शन इज देयर हां ऑफिशियल इंस्पेक्शन रे आमे प्रायर नोटिस देखि प्रायर इन्फॉर्म करिकि मध्ये आमे जाई परिबा से तार गोटे असिस्टेंट थिबो कहार इंस्पेक्टर गोटे असिस्टेंट थिबे इन अ रिजनेबल टाइम इन अ रिजनेबल आवर इन अ रिजनेबल डे जेमति कि संडे इज ए हॉलिडे आमे से दिन जाई परिबानी हला so reasonable day the inspector can enter tar kitte power pura lekha hai bahut ta power lekha it is a very powerful person the person can take any kind of action against a factory and occupier that is a inspector to chapter 2 kon hela inspecting staff section 8 kon hela inspector inspecting staff ro section 8 hela inspector appointment of the inspector section 9 kon hela power of the inspector and section 10 kon hela certifying surgeon now what do you mean by certifying surgeon is a person certifying surgeon means it is a person we can call as a appointed by the appointed by the state government notification in the official gazette it is a qualified medical practitioner we can call as a certifying surgeon ta mane kon buchile what do you mean by certifying surgeon kiye it is a qualified medical practitioner gote medical practitioner appoint heitibe kothre factory pai boli and the person is a certifying surgeon appointed by the state government notification in the official gazette samaste notification in the official gazette through ri astibe je ki inspector chief inspector additional inspector as well as the certifying surgeon semanakara power semanakara everything seta decide katibo ki state government kahi ki ma'am it state government decide kala see the factory ame kahiba the factory it is the controlling authority is the state government respective state government say amaro odisha re factory achi seta amaro odisha government takko control karibo so seiti pai jette sabu rules regulation term condition everything that is fixing by the state government right so eiti kon hela so certifying surgeon is a practical it is a qualified medical practitioner but as like a doctor जने डॉक्टर अपॉइंट हेतिबे तांकर काम कोन आमे सेटा फ्यूचर रे मैम जोडा पीएसयू जो फैक्ट्री अछि सपोज नाल्को हैला सेल हैला तो सेगुडा को की ये करबो सेटा कोन स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करबो सेटा स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल कंट्रोल करबोनी सेटा दैट फैक्ट्री अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट ओके तार अछि से फैक्ट्री केतेटा स्टेट रे अछि धरंतु मोर देन वन स्टेट रे से फैक्ट्री अछि हैला दुईटा स्टेट रे से फैक्ट्री अछि तार कंट्रोलिंग अथॉरिटी की हबो से फैक्ट्री रा खाली हमर स्टेट रे अछि हमर स्टेट रे अछि ता कंट्रोलिंग अथॉरिटी हैला हमर स्टेट गवर्नमेंट हैला जेमति कि हमें नाल्को कहबा नाल्को रो अल्टीमेट कंट्रोलिंग अथॉरिटी की स्टेट गवर्नमेंट बट एनटीपीसी रो अल्टीमेट कंट्रोलिंग अथॉरिटी की दैट इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट सेटा अछि लिस्ट अछि के सेंट्रल कंट्रोल करिवो के स्टेट कंट्रोल करिवो सेटा पूरा लिस्ट अछि पीएसयू जेमति कि मिनी रत्ना नवरत्ना महारत्ना कंपनी वगैरह अछंती जेटा कि फैक्ट्री को हमें तार अंडर रे जाउछन समस्ते बट जो फैक्ट्री टा आम स्टेट अंडर रे अछि खाली ताकू आम स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करी सेमती जो आंध्र प्रदेश अंडर अछि से आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट कंट्रोल करिवो सेथिरे सेंट्रल गवर्नमेंट रो इंटरफेरेंस रहइबन बट मैम सर्टिफाइंग सर्जन रो कामोटा कोन एग्जैक्टली माने सर्टिफाइंग सर्जन रो काम हैला धरंतु गोटे फैक्ट्री रे यंग पर्सन माने काम करछंती हैला हमें ऑलरेडी पढिले हु इज अ यंग पर्सन a person can be either child or adolescent
चाइल्ड भी पारिबो एडल्ट भी पारिबो एना आपण मते संगे संगे कहबे मैम हमें पूरा चाइल्ड लेबर रेगुलेशन एबोलिशन एक्ट कले चाइल्ड माने काम करि परिबेनी नेदर चाइल्ड कैन वर्क नॉर एडल्ट कैन वर्क तो केमती यंग पर्सन माने काम करि परिबे as per the factory as per the child labor regulation abolition act सेथिरे 1986 अनुसारे हमरो सेठी दुईटा लिस्ट अछि पार्ट ए पार्ट बी सेटा आपनकर एक्ट टाइटले नाही सितमा हम सेटा पढिबानी पार्ट ए पार्ट बी सो जो गोटे पार्ट ए रे से माने कोठी कोठी काम करिवेनी पार्ट बी रे से माने कोठी कोठी काम करिवे को फैक्टरी रे से माने अलाउ अछंती सेठी सेटा पूरा मेंशन करा जायछि जेमती कि समाने करि परिबेनी फॉर एग्जांपल मु गोटे देबी सर्कस रे समाने काम करि परिबेनी होटल मोटेल रेस्टोरेंट ए सब स्पा ए सब रे काम करि परिबेनी सर्कस जेमती कि एलिफेंट केरी एलिफेंट कर जो ये करंती से सब रे करि परिबेनी बट किछटा फैक्टरी अछि समान को स्टेट गवर्नमेंट अलाउ करे छी राइट सेठी जो समाने काम करिवार कैपेसिटी अछि कि नाही यंग पर्सन मानकर सेटा सर्टिफाइंग सर्जन समान को सर्टिफाई करिवे कोन गोटे टोकन इशू करिवे कौन अनुसार तंकर हाइट वेट ए सब अनुसार समान को टोकन इश्यू करा जिवो as well as the adult people whether that person is fit for that particular area धर गोटे hazards area रे आपण गोटे लोक को पठै दोचंती is that person is fit for that hazards area सेटा को किए सर्टिफाई करिवो that is the responsibility of the certifying surgeon जदि सी सर्टिफाई न कला से लोक सेठी काम कर परिबो नाही सेहिति पई it is mandatory the certifying surgeon have to issue a token and that particular person basing on this the particular person will work in such kind of area ता छडा वर्ष को वर्ष once in a year एमानकर सब कोन हबो हेल्थ चेकअप हबो समस्तनकर जोटा कि किए करिवो ऑक्युपायर पैसा रे सीए तार पैसा इन्वेस्ट करिवो तार जत्ते सब समानकर हाइट वेट इश्यूज कोंतो मैम ए जो सर्टिफाइंग सर्जन रोजंदी अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर रोजी आरो किछि माने किछि अछि कि माने केते वर्ष रहबे कि कोन कि आरो ऊपर किछि ये नाही कंडीशंस नाही कि केते वर्ष रहबे एमाने पूरा आज पर द नोटिफिकेशन ऑफ द ऑफिशियल गेजेट आसीबे जेमति आपण चाकरी करिया को जाउचंती हला आपण धरंतु 30 वर्ष रे चाकरी करले आपण कोडी चाकरी करले जाईकरी आपणकर पीएसयू रे कोडी जॉब करले आपणकर नोटिफिकेशन वाला ऑफिशियल गेजेट रे कोन ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट हला मन इच्छा जे कि आपण चाकरी कर देले कि ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट हला सेति पे आपणकर सर्टिफिकेट देखा गला सेति पे आपण रिटर्न देले सेति पे आपण इंटरव्यू देले से अनुसार आपण पाइले आपण केते वर्ष पर्यंत कंटिन्यू करबा अप टू 60 वर्ष पर्यंत 60 इयर्स पर्यंत से अनुसार माने आसीबे सर्टिफिकेट नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट माने पूरा अपॉइंट है and but it depends on the government that they can send it the person to anywhere of this anywhere yes as per the requirement as per the availability of the factory as per the सब अनुसार state government decide करिबो एमानको कोठी पठा जिवो as well as एमानकर salary rules regulation responsibilities salary everything that decided by the state government and also providing by the state government. Thank you. Clear Yes, na? got it. Okay. Got it. Next Diba? Okay. So this is all about your chapter 2. So chapter 2 रे हमें कौन discussion कले? Chapter 2 रा main factor हैला inspecting staff. Chapter 2 inspecting staff. Under inspecting staff you have to remember 3 factors: appointment of the inspector, power of the inspector and certifying surgeon. ए तीनटा जिंस सेक्शन 8 सेक्शन 9 and section 10 ए तीनटा जिंस को एठी मन रखबे आमे ना जिबा कोठी की ना chapter 3 is the health facility आमे section 10 रे कंप्लीट करले chapter 2 को now we will start chapter 3 it relates to the health facility it including health facility it covers section 11 to section 20 health facility kete ru kete cover kala section 11 to section 20 you can see this slide here this is the health facility as per this Factories Act 1948 and the factory is maintaining such kind of health facility and providing such kind of healthy facility towards the worker and maintaining health facility over the factory what it relates to section 11 to section 20 pura serially jiba ame hala. So dear students, section 11, it implies cleanliness. Now, what do you mean by cleanliness? Cleanliness, it implies every factory, they must clean their floor, we can say the floor, staircases, wall, every surface, every area, they have to clean every day through sweeping and mopping. Tamane,
फ्लोर को स्टेयरकेसेस को विंडो को आपनकर वॉल को सब एरिया को से माने सब दिन सफा करिवे थ्रू स्वीपिंग एंड मोपिंग झाड़ू और पोछा मारी की so that the factory must be maintained clean and hygienic factor. So it is a meaning of cleanliness, right? सब एरिया को हैला देन चलंतु सेक्शन गोटे गोटे लाइन रे कहि कहि छिबे ध्यान रे मन रखिबे सेक्शन 12 डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड इन्फ्लुएंस आफ्टर क्लीनलीनेस जते क्लीन सरी गला जते आपण घर झाड़ू कर सरचंती फैक्ट्री को आपण हम जदी घर सहित कंपेयर करबा ना फैक्ट्री को सेम हम जिंस आइडेंटिफाई करि परिबा जते हम झाड़ू मार साले क्लीन कर साले हम जते सब अननेसेसरी जिंस अछि दोस आर द अननेसेसरी थिंग्स दैट इज नॉट यूजफुल then what we will do we can dump in a one area that is the disposal of waste and effluent देखो आज के डेट आपण एठी देखि परिबे पिक्चर ता ए अनुसार हमें कोन करछ फैक्ट्री को क्लीन करछ आ झाड़ू मारिबा को हम पाखरा नाही माने जणे आसीबो ताको झाड़ू मारिबो इज इट पॉसिबल गोटे एते बड़ फैक्ट्री को हम गोटे लोक आसीबो झाड़ू मारिबाटा कोन घर होईची झाड़ू मारि परिबोनी सेति पे किते बड़ बड़ मशीनरी टेक्नोलॉजी आसी गलानी जोटा कि फैक्ट्री को पूरा चटाचट फटाफट क्लीन कर देबो स्वीपिंग कर देबो मोपिंग कर देबो सब कर देबो क्लीन एंड हाइजीन मेंटेन कर देबो राइट सो सेटा हला जेमति कि आपण मानकर आगुरु हमर जते स्ट्रीट सब अछि हमर जति भुवनेश्वर रे कहबा झाड़ू मारथिला आसी कि लोक माने सकाळो सकाळो आज का डेट तुम स्ट्रीट को कहबो झाड़ू मारा होची कोन मेन रोड को झाड़ू मारा होची गोटे मशीन आसी रात रे पूरा क्लीन करके पळोची पूरा सब रोड को तो दिस इज व्हाट द क्लीनलीनेस आफ्टर क्लीनलीनेस कोन हला डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड इन्फ्लुएंस देखंतु आमे भी आज का डेट हमको म्युनिसिपालिटी कहि देछि भुवनेश्वर म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन बीएमसी आपण माने वेट जिंस गोटे एरिया रे डंप करिवे आपनकर ड्राई जिंस आ गोटे एरिया रे डंप करिवे राइट सेति पे हमको दुईटा डस्टबिन अलाउ करा जाय छी जदि आपण गोटे डस्टबिन करिवे आपनको फाइन पड़िबो आपनकर से वेस्ट जिंस को कलेक्टिंग करिवनी म्युनिसिपालिटी as like as over the factory should dump all the unnecessary things in one particular area dumping zone jota ki dumping area ame kahi pariba right so disposal of waste and effluents after washing after sweeping and mopping the proper arrangement should be there over a factory the factory can basically means what dump all the unnecessary things in that particular area you can see this slide here right so this is what the disposal of waste and effluents then ventilation and temperature it implies effective and suitable provision should be there over a factory for proper ventilation and temperature. It means ventilation, the proper ventilation facility, plenty of windows and doors should be there over a factory so that the circulation of fresh air, it must be there in a factory. जोटा कि हमें इतने सुंदर temperature, ventilation, temperature maintain करिबा, जोटा कि हमें plenty amount of windows, doors तबा, जो थिरे कि हमारा fresh air circulation है पार्टुओ factory रे. प्रत्येक टाइम में कहले ventilation and we should maintain the temperature in a hot summer जदि हॉट समर आज का डेट रे देखंतु हमर एना कोन चलछि पूरा हॉट वेव चलछि पूरा हीट वेव चारियाडे देखिबे हां पूरा बॉल हो जाउछि पूरा एकदम से चारियाड तो कोन करे जाउछि हमें से अनुसार हमें कूलिंग फैसिलिटी मेंटेन करछे हम लेवल अनुसार हमें फैन दउछे एडजस्टमेंट फैन दउछे हम विंडो ओपन करछे डोर ओपन करूछि हमें कोन करछे हमर एयर कंडीशन हम घर को ये करूछि कूलिंग फैसिलिटी अनुसार सो फैक्ट्री हैव टू प्रोवाइड सच काइंड ऑफ फैसिलिटी टुवर्ड्स द वर्कर्स proper ventilation and temperature to maintain the temperature in case of the heat wave in case of the hot summer right so this is what the ventilation and temperature dust and fumes dust hela dhuli fumes hela kana धुआं vapor type रो धुआं आसुतबो हला तो कोन करा जीवो एठी सुनतो फैक्ट्री त माने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हबो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तले हबो तो सेठी धूली धुआं सब बाहरिबो त माने हमें कोन करिबा so for that for the dust as well as the fumes the factory have to provide different kind of exhausted appliances jota ki hum exhaust fan kahuche exhaust appliances for in the necessary area in the different area so that the dust fumes and other impurity things it must be removed over the factory jette sabu jinsa achi sabu remove hoijibo factory ro and factory ame pura full of oxygen रे full of healthy well I full of healthy feel करिबा right so हमें कौन करिबा so 80 से type रो हमें ventilation temperature ventilation maintain करतिबा so the all the means what in case of the dust and fumes it must be removed properly over the factory right and हमें ताको गोटे hygienic environment maintain करि परिबा artificial humidification
Now what do you mean by artificial humidification? देखो students, जदि आमे कहिबा एई ना हमर जो heat wave चलीची, it is a artificial or natural? कौन है एटा पिला माने? Natural ma'am. Natural, very good. किंतु आमे धरंतु ठंडा माने ठंडा दिन रे एइना तो देखंतु जनरल रे एतिकी हीट वेव चलीची जदि आमे सेटा जदि जीवा नियरेस्ट फायर आपण किचन को पळोचंती ता टेम्परेचर ता आउरी बढ़ी जाउची हैला जदि आपण नियरेस्ट फायर काम करचंती ता टेम्परेचर आउरी बढ़ी जाउची हैला सेटा देखंतु नेचुरल एटा आमे जदि इन फ्रंट ऑफ द फायर इन फ्रंट ऑफ द hot machinery the people are working and the temperature is more than the normal temperature that is artificial सेटा कोन नेचुरल की सेटा आम पाई बोले जे दैट इज मैन मेड आमे से मशीनरी को ये करचे आमे से फायर को ये करिचे सो सेई जो एरिया रे लोक माने काम करूचंती artificial humidification implies people are working nearest the fire nearest the means what hot machinery so at that particular moment the factory had to provide the proper cooling facility जोटा कि हमको कौन प्रोवाइड करिबा प्रॉपर कूलिंग फैसिलिटी देखंतु मेल्टिंग ऑफ हमें कहबा एल्युमिनियम मेल्टिंग करूचे से एरिया रे पूरा फायर रे ही काम से एरिया रे जो लोक माने काम करिवे सो समान को टेंपरेचर लेवल टा केते 8 टू आउरी बहु परसेंट रे समान कर हाई थिबो सो हमें सिटी कोन करिबा ना वी शुड प्रोवाइड द प्रॉपर कूलिंग फैसिलिटी सो दैट द वर्कर्स शुड नॉट फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट इज आर्टिफिशियल मेंटेनिंग आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन राइट जेडी आपण फैन देबे हां कोंतु सेक्शन 13 और 15 मीटर डिफरेंस कोन सेक्शन 13 हला टेंपरेचर ऊपर भी 13 हला आपणकर एटा हला 13 और 15 भीतर एयर डिफरेंस हला एटी हला वेंटिलेशन एंड टेंपरेचर वेंटिलेशन हला फैक्ट्री रे आपण बहु परिमाण रे वेंटिलेशन देबे जोटा कि आमे हमर वेंटिलेशन रे कोन आसला विंडोज आसला डोर आसला आपणकर आसी गला कोन कहले आपणकर जो ये वैरायटी काइंड आपण एडजस्टेड फैन देले ए सब देले ता माने एठी कोन कहले एठी आपणकर गोटे वेंटिलेशन आमे कोन हम डोर विंडो को ओपन कर दोचे एटा आमे वेंटिलेशन द्वारा आमे टिके कोन वी कैन फील फ्रेश माने हम गोटे फ्रेश एयर को सेठी पाई परिबा तो आमे टिके सुंदर भाबरे काम करबा से अनुसार हम टेंपरेचर ता भी मेंटेन नै परिबो एठी हला स्पेसिफिकली आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन माने एटा हला हमर सब केस रे वेंटिलेशन एंड टेंपरेचर हम सब केस रे दरकार एठी खाली निया पाखरे वेंटिलेशन टेंपरेचर दरकार नै एना मोर हमर घरे किचन रे धरंतु जने काम करछन मु बेडरूम रे अछि बेडरूम रे कोन निया लागि छि कि नै तो मु बेडरूम रे कोन मते भी गरम होउची ता माने मु एठी कोन करछि विंडो डोर सब ओपन कर देछि एटा समस्तंग पई वेंटिलेशन एंड टेंपरेचर दरकार हैला किंतु आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन हैला को जगह ओनली किचन रे हमें कहबा काहे कि ना सेडी आर्टिफिशियल सेडी जोटा कि फायर रो काम होउची सेडी जोटा कि हॉट मशीनरी रो काम होउची सेडी ह्यूमिडिफिकेशन दा बहु परिमाण रे रहउची सेही जगह हमें कोन मेंटेन करबा स्पेसिफिकली गॉट इट ना ओके मैम बुझिले ना सो ओनली Yes, ma'am. आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन मींस दोस पीपल आर गोइंग टू वर्ड कहली आपनको आपनकर वेंटिलेशन सब जगह रे दरकार सब जगह नहले हम निश्वास नहीं परिबानी विदाउट ऑक्सीजन हम मरि जिबा हमको एटा कोन दरकार ओनली पीपल आर वर्किंग नियरेस्ट द फायर नियरेस्ट द मींस व्हाट हॉट मशीनरी सो एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट पीपल आर फीलिंग सफोकेशन कारण सेही टेंपरेचर मोर देन दैट द नॉर्मल टेंपरेचर हैला सो पर्टिकुलर सेक्शन 15 टा सब फैक्ट्री यूज होएनी जोटी केवल हॉट मशीनरी यूज होछि सेठी केवल सेक्शन 15 काम करे यस आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन जोटा अधिक थिबो सेही जगह रे इन केस ऑफ द फायर इन केस ऑफ द हॉट मशीनरी हैला सेठी हमें प्रॉपर कूलिंग फैसिलिटी रे बंदोबस्त करबा हैला जिबा नेक्स्ट ओवर क्राउडिंग अच्छा ओवर क्राउडिंग क्राउडिंग माने कोन कहिले ओवर क्राउडिंग पर चिंता करबा क्राउडिंग माने कोन जोटा कि भिड बहुत भिड थिबो हैला आपण कहबे कि ना ये जिबे कोठी की रथ यात्रा हबो श्रीगुंडीचा हबो सेटा को हमें ओवर क्राउडिंग कहबा ना कहबानी यस मैम ट्रेन तो अधिक हले ओवर क्राउडिंग हमर पर्टिकुलर गोटिए स्ट्रक्चर जते अधिक हो जाउ सेठी हमें ओवर क्राउडिंग कहउचे अच्छा देखंतु ए पिक्चर टा को देखबे हैला एटा हला फैक्ट्री एटा ओवर क्राउडिंग ना एटा कोन नॉर्मल क्राउड रे लोक अछंती कि नो so to work in this particular area it is quite difficult
एटा को कहा जाय ओवर क्राउडिंग as for the factory act 1948 more than the in a particular area more as per the am jeti ki normal people रहबा दरकार it is more than that एटा को कहबा हमें ओवर क्राउडिंग नो हैला जेमति कि हमें कहबा रथ यात्रा ओवर क्राउडिंग सो क्राउड हैला जोटा कि धस्ता धस्ती जने आ जन को पाखो को पूरा माने टच हेउतबे लोक माने सो आकु हमें केमति कंट्रोल करिया से सिना श्रीगुंडीचा कंट्रोल हे जाउची फैक्ट्री कोन सेटा कंट्रोल हो से लोक काम करिवे ना धस्ता धस्ती हेबे सो एई जो ओवर क्राउडिंग को जोटा कि हमर ईस्ट इंडिया कंपनी सब चलथला ओवर क्राउडिंग एरिया सब ईस्ट इंडिया कंपनी रे सब एक्टिविटी हैला लोक मान को ए टाइप रो यूज करथला तो एई ओवर क्राउडिंग को कंट्रोल करबा पई कोन कला हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहिला ना सेमति हे परिबनी एवरी वर्क रूम गोटिए वर्क रूम रु आ गोटे वर्क रूम वन वर्क रूम टू अदर वर्क रूम the distance must be the minimum distance not maximum the minimum distance must be 14.2 cubic meter केति के से आपण चिंता करिवे हैला 14.2 cubic meter बिफोर एडा थिला 9.9 cubic meter थिला एना अमेंडमेंट है कि 14.2 cubic meter करा जाय छी हैला सो गोटिए वर्क रूम रु आ गोटे वर्क रूम रो डिस्टेंस इट मस्ट बी 14.2 cubic meter minimum so that we can avoid the overcrowding so इठु हमें कोन करबा ओवर क्राउडिंग को पूरा अवॉइड करि परिबा देन असला कोन न बुझी पाले पचारिबे एटा पूरा बुझी जाइथिबे लाइटिंग कोन द फैक्ट्री हैव टू प्रोवाइड प्रॉपर लाइटिंग फैसिलिटी पूरा सुंदर भाबरे लाइटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करिवो इन एवरी एरिया those are the interior place the factory had to provide the plenty of artificial lighting facility quote interior area re those are the interior place where the natural light provision might not be there at that area the factory have to provide plenty of artificial lighting facility and in case of other area the factory have to provide the lighting facility as well as ta sahito the every room of the factory it must be proper what a proper means we can say the plenty of window facility and the skylight facility so that the what will happen the natural light also can enter over the factory and the people can work very comfortably tamane artificial amar kon lighting facility jota ki amar interior area re seta amar light jibani to ame seti kon deba artificial light deba so ame duita ka light ro suitability anusare deba artificial light as well as the natural light in a different area से provision थिबा दरकार and आमे जोठी के skylight facility window facility properly रखिथिबा जोठी के natural light रो provision अछि and it must be maintained very clean so that what will happen the natural light it can pass over the factory and आमे सेठी बढ़ा सा कोन कहिले ना आमे comfortable feel करबा सेठी काम करबा पई बोल हैला तपरे असला कोन drinking water the factory have to provide plenty of drinking water facility for every workers पूरा भरपूर भाबरे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी दबो पूरा एंटायर फैक्ट्री सफिशिएंट नंबर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट्स and the drinking water point it must be maintained clean and hygiene बहुत परिमाण रे दबो sufficiently right किंतु if in a factory more than 250 workers are working 200 रो 250 रो अधिक लोक फैक्ट्री रे काम करचंती तो the factory has to provide cooling drinking water facility during the hot weather एई जो हॉट वेदर चली छि हमरो हॉट वेव चली छि हीट वेव चली छि एई टाइम रे जदी गोटे फैक्ट्री रे 250 की ताठो अधिक लोक काम करूचंती then the factory has to provide the cooling drinking water facility and that cooling drinking water facility that area where the cooling drinking water is there during the 6 meter within the 6 meter urinal open drain latrine all those things should not be there ए सब जिंस नथिबो जेमति 6 meter भीतर and that cooling drinking water facility area it must be maintained very clean and hygienic से area को हमें पूरा clean और hygiene maintain करके रखिबा right 6 meter भीतर 6 meter भीतर कोनोसी प्रकार ओपन ड्रेन थिबो ना लैट्रिन थिबो ना यूरिनल थिबो एटा केते जनक पई प्रोविजन सुनंतु मु कोन कहली दुटा कंडीशन एटी कहली
ता माने कोन आपण कहबे मैम 250 लोक रो तळु हेले कोन पानी दबनी मु बिल्कुल से कथा कहनी मु कोन कहली 250 लोक रो तळु हेले plenty number of drinking water point must be there over the factory and the worker must be used properly and said हमें मेंशन भी करथिबा जोटा कि इन लोकल लैंग्वेज पानीय जल ड्रिंकिंग वाटर जोटा कि आपण को लोकल लैंग्वेज अनुसार आपण सेठी मेंशन भी करिथिबे प्योर ड्रिंकिंग वाटर जहां भी आपण माने आपण कर परिबे and you have to mention there but if it is that more than 250 workers are working then you have to provide the cooling drinking water facility in a hot weather hot summer this is a drinking water facility then chalantu latrine and urinals जोटा कि हमें कोथरे अच्छे हमें ना हेल्थ फैसिलिटी रे healthy environment हमें केमती मेंटेन करिया basing on this we can maintain a healthy environment then the latrine and urinals the factory has to provide the plenty number of latrine and urinal facility separate for male and female workers and it must be maintained in a local language latrine and urinal for male and female जोटा कि लेखा होइथिबो सेठी मेंशन करा जाइथिबो latrine na urinal हां कोंतु Is it mandatory to mention in the local language? आपण लोकल लैंग्वेज न करिवे धरंतु आपनकर सेडी वर्कर्स मानकर जनरली वर्कर्स मानकर इंग्लिश रे लिटरेसी लेवल ता बहुत कम हैला आपण सेडी इंग्लिश रे लिखिथिबे से मान जानि परिबेनी मेल जगह फीमेल पळबे फीमेल जगह पळबे नै एबे आजिकली ग्राफिकल आसी गलानी मैम ग्राफिकल आपण कहबे मैम एयरपोर्ट रे तो ग्राफिकल वे रे सब दिया जाउची सब जगह रे ग्राफिकल वे रे दिया जाउची तो सेटा हमें करि परिबा सेठी फिर भी लेखुचंती टॉयलेट कहि कि लेखुचंती तार गोटे चित्र दिया जाउची देखिबे सेठी लेखा जाउची पूरा चित्र जो दिया जाउची किंतु सेटा ग्राफिकल लैंग्वेज रे करि परिबे किंतु फैक्ट्री तो एटा ग्राफिकल लैंग्वेज ता कोठी आपण एयरपोर्ट रे रखि परिबे ग्राफिकल लैंग्वेज ता आपण कारण सेठी सेही टाइप रो लोक मानकर सोफिस्टिकेटेड लोक मानकर माने येटा राइट ग्राफिकल लैंग्वेज आको ना रखि बारे भी डिफरेंट प्लेस अछि किंतु फैक्ट्री रे जनरली कोन हबो कहिले more illiteracy people are there माने आज का डेट रे हमर illiteracy गवर्नमेंट हटै देला हमर illiterate केही रहि परिबेनी समस्त पढिबे हम आगो को पढिबा हैला up to 14 years as a child the free and compulsory education provided by the government as per the because this is our fundamental right किंतु सेति के भितरे गोटे लोकर इंग्लिश लिटरेसी ता सेति के थिबा दरकार तो से अनुसार फैक्ट्री मान करे से कहूची जे आपण माने लोकल लैंग्वेज रे मेंशन कर देले बहुत कन्वीनियंट हबो वर्कर्स मानन को बुझिले ना जदि आपण न करिवे आपण ग्राफिकल भी यूज करि परिबे दैट इज नॉट ए बिग इश्यू बट आपण लैंग्वेज ता जदि यूज करिवे ग्राफिकल से तो दैट इज मोर सुटेबल कैन बी टुवर्ड्स द वर्कर्स हैला दैट इज सेटा गोटे माने कोन कहले मेजर इश्यू नो यू कैन डू एनीथिंग देयर तो एठी कोन कह जाउची सो आपण कोन करिवे ना प्लेंटी ऑफ लैट्रिन एंड यूरिनल फैसिलिटी यू हैव टू प्रोवाइड तार रेशियो अछि आपण को प्लेंटी जो मु कहूची यार रेशियो गोटे अछि एतिक वर्कर भितरे गोटे लैट्रिन एंड यूरिनल फैसिलिटी दिया जिवो ड्रिंकिंग वाटर रे भी सेंती अछि आपण को फैक्ट्री 1000 जन काम करछथि गोटे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी देबे ना कोन ना एतिक लोक भितरे एतिकटा ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी दिया जिवो कूलिंग ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी तार पूरा सब रेशियो रखा जाईछि हैला आपण को एतिक लोक काम करछथि एतिकटा यूरिनल एतिक लोक काम करछथि एतिकटा लैट्रिन ए सब रो पूरा आपण को रेशियो अछि से अनुसार फैक्ट्री प्रोवाइड करिवो तो एठी कोन कोहा गला डियर स्टूडेंट्स सो हमें तो plenty of latrine and urinal facility दबा लोगों को it is separate for male and female worker it is mandatory but if it is more than 250 workers are working over a factory 200 ରୁ 250 ऊपर जदि लोक माने से फैक्ट्री रे काम करूचंती then the factory have to mandatory to provide the कोन sanitary waste latrine and urinal facility sanitary type latrine and urinal facility दा माने कोन sanitary waste माने ना sufficient तो latrine दबा sanitary कहूची कि आपनकर latrine and urinal it must be clean time to time with a different means what means it means कोन कहबे आपनकर lime wash होतबो आपनकर detergent wash होतबो आपनकर phenyl wash होतबो तार अछि कई को मोमेंट रे को wash ता करा जिवो ऑरेंज कोन हबो एटा इन्फेक्शन को पूरा ये हबो लीड करिवो तो सेति पई कहिची से केते रेशियो रे केते हम दबा सेटा हम जानिबा दरकार नै सेटा जो माने प्रिपरेशन करिवे पूरा ये पई कहि से सब पढिबे हैला केते रेशियो सब अछि से अनुसार हम सैनिटरी वेस्ट लैट्रिन एंड यूरिनल फैसिलिटी दबा सैनिटरी वेस्ट ला मोर देन 250 वर्कर्स 250 लेस ला हम नॉर्मल लैट्रिन एंड यूरिनल फैसिलिटी प्लेंटी ऑफ दबा एंड इट आला टाइम टू टाइम जेमते क्लीन होतबो देन चला तो स्पिटन्स माने कोन हैला स्पिट करबा थुकीबा हैला
थुकिबा कोन थुकिबा देखंतु लोक मानकर अभ्यास अछि सब जगह रे सब एरिया रे इट इज नॉट ओनली द फैक्ट्री इट इज बट आल्सो एवरी एरिया लोक मानकर गोटे माने कोन खाली जनरल हैबिट रे सेटा गोटे समान चेंज भी करंती तांकर से हैबिट ता को कोन ना बेसिकली people are chewing like gutka pan वगैरह and though they are chewing the gutka pan वगैरह so they are spit the people generally spit here to there and ultimately what happened now at that particular area it looks like very unhygienic situation no it is very unhygienic environment situation so it kon kara jibo see every factory they have to provide sufficient spit and facility in a convenient place जमती कि convenient place देखिए पार्क मानकर भी रखा जायछि आपण इयाडे सियाडे थुकिबे नी एई जगह रे थुकिबे हला पूरा रखा जायथिबो पर्टिकुलर प्लेस रे आपण सेई जगह रे थुकिबे ऑरेंज कोन होछि माने एको तो वर्कर दुई रे तो लिटरेसी आजिकल तो लिटरेसी लेवल रे भी लोक माने थुकिबारे जमा हेला करंतेनी हला कारण गुटखा खाइबे पान खाइबे आ एडी सेडी जोटी ड्रिंकिंग वाटर आंतिबे देखिबे सेडी ही थुकी दिबे जीवे पानी आनिबे सेडी थुकी गिरी आसीबे सीडी रे जीवे थुकीबे देखिबे सीडी रे मैक्सिमम देखिबे सो ठाकुरंकर फोटो कलर मानकर लगाइथिबो केते समान को कुआ जदी समान एते इलिटरेट रहिबे एजुकेटेड इलिटरेसी ताहले आपण वर्कर मान को कोन कहबे तो सेठी पई कोन करा गला द फैक्ट्री हैव टू प्रोवाइड plenty number of splitting facility systems sufficient splitters so that what happened na ame particular size agar lok mane thukibe and we should maintain clean and hygienic condition over the factory ta chhada kon habo jodi apana thukile here to there say splitton area re no thukigi edi side thukile kon habo na you have to penalized for that you have to the factory will charge a fine to the individual person apana ko individual ko fine paka jibo hela so apana se fine ro charges ta kete रहबो minimum 5 rupees 5 टंका मिनिमम रो स्टार्ट हबो डिपेंड करूची आपण को ऊपर केते चार्जेस लगा जिवो बेसिंग ऑन दिस वी कैन मेंटेन द फैक्ट्री वेरी मच क्लीन एंड हाइजीन and it is healthy environment we can create that decide and designed by the Indian constitution and these things developed by this thing maintained by the means the rule framed by the state government and maintaining by the factory got it dear students बुझी गलो एनी डाउट yes ma'am हेल्थ फैसिलिटी पूरा बुझी गले हेल्थ फैसिलिटी पूरा बुझी गले ओके वेरी गुड और डियर स्टूडेंट्स हां कोंतु मैम जदी कंपनी ए सब 11 to 20 सेक्शन भीतर किछि न माने व्हाट आर द प्रोविजंस एंड द पेनल्टी फैसिलिटीज अच्छी आपणकर हैला आमे जो 6 टा 7 टा सेक्शन पढिबानी की तापरे पेनाल्टी एंड प्रोसीजर रो गोटे पूरा चैप्टर अछि अच्छा वर्कर न मानिले कोन पेनाल्टी पडिबो एम्प्लॉयर न मानिले कोन पेनाल्टी पडिबो को किए न मानिले कोन पेनाल्टी विथ इम्प्रिजमेंट दुईटा को अछि खाली पेनाल्टी नुहो पेनाल्टी फाइन पेनाल्टी विथ इम्प्रिजमेंट त माने आपण जेल भी जिबे सो से सब प्रोविजन गोटे चैप्टर रखिछि सेठी सब लिखा जायछि काहा को कोन पेनाल्टी पडिबो इम्प्रिजमेंट हबो बुझी गले ना It is on chapter 10 na ma'am. कोन कहिले It is on penalty and chapter procedure 10, chapter penalties 10 and penalty and procedure yes हैला so dear students आज पे एडी स्टॉप मैडम कली खाली आपण एटा खाली ओनली फैक्ट्री पई प्रोसीजर ना फैक्ट्री हम सेते फैक्ट्री एक्ट 1948 पढिले माइंस एक्ट पढिबा माने माइंस कौन से कंपनी जेमते होला ट्रैवल की फाइनेंस बैंक एनजीओ तापे बैंक पे रूल अछि बैंक पे एक्ट अछि जते सब कंपनी बैंक माने सेक्टर बैंकिंग सेक्टर पे तारा एक्ट अछि आपनकर अदर सेक्टर पे सब एक्ट अछि जानि परबा आपनकर जते लॉ पढुंती आपनकर गुटे ना एथिरे आसीबनी आपनकर एई लॉ रे आसीबनी आपनकर एटा इंडस्ट्रियल लॉ रे जाउची बैंकिंग जो आपनकर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस पढुचंती गोटे पेपर सेइथिरे से सब आगो कवर होची बैंकिंग सेक्टर पई बोली इंडस्ट्रियल लॉ रे खाली आसीबा कोन कहले आपनकर इंडस्ट्री आउ फैक्ट्री ए सब आसीबो माइंस प्लांटेशन इंडस्ट्री आउ आपनकर बीडी सिगारेट ए सब एरिया को जते सब हाजर्स एरिया को कवर करची ए सब हैला जोथरे ए लॉ को कोन प्रोविजन रखुची हां आमे एई एक्ट रे किछटा प्रोविजन पढिबा जेमति की
आपणकर कंपेन्सेशन सेटा समस्तक पई वर्कमैन कंपेन्सेशन एक्ट समस्तक पई सेटा खाली फैक्ट्री पई नै आमे एटा जो पढुचे जे प्रोविजन को ओनली फैक्ट्री पई मैटरनिटी बेनिफिट इंडिया होल पई पढिबा ग्रेच्युटी होल इंडिया पई पढिबा समस्तक पई माने लोक माने प्राइवेट रे करंतु पब्लिक रे करंतु छोट ऑर्गेनाइजेशन रे करंतु बड़ ऑर्गेनाइजेशन रे करंतु ग्रेच्युटी प्रोविडेंट फंड जोटा कि मु ईपीएफ कहले ग्रेच्युटी प्रोविडेंट फंड कंपेन्सेशन ईएसआई एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस मैटरनिटी राइट बोनस समस्तक पई से सब पढिबा एई खाली फैक्ट्री पे एक्सक्लूसिवली सेति में ऊपर हेडिंग रे कोन पले फैक्ट्रीज एक्ट 1948 जत्ते फैक्ट्री अछि इंडिया रो समस्त को एटा कवर है इट एक्सटेंड होल ऑफ द इंडिया समस्त को पे एटा एप्लीकेबल सब फैक्ट्री पे बुझिले ना गॉट इट ना क्लियर ना आगे मैम स्टूडेंट्स ओके 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 चलो थैंक यू सो मच अपन नेक्स्ट क्लास आज्ञा कोन तू मैम जो सर्विस माने सर्विस के सब अलग रहबो ना किछि सुबा गलानी कोन कहिले मु कहली सुबा गलानी जो कि गुड्स प्रोडक्शन से सब माइंडसेट में फैक्ट्री एक्ट सिटी लागू होबो जो सर्विस प्रोडक्शन माने जेम बैंक इंश्योरेंस सर्विस सेक्टर पे सर्विस सेक्टर सेटा हमें पढ़िबा अछि यार जो सर्विस सेक्टर मानक पई बोली को एक्ट सब एप्लीकेबल होची को प्रोविजन सेटा हम आगे जाई की पढ़िबा सर्विस सेक्टर मान सब सर्विस सेक्टर भी से सब इंक्लूड रहबे ता भीतर अच्छा ठीक ना ओके चलंतु हम स्टार्ट करी छे ना थैंक यू सो मच अपन नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करंतु टुमारो सेम टाइम 6 रु 7 हम नेबी स्टूडेंट्स एंड 6 रु 7 आपनकर फैक्ट्री एक्ट को ट्राई करबा हमें कंप्लीट करबा पे हमर हेल्थ सल्ला हमें तीनटा चैप्टर रेडी पढिबा सेफ्टी वेलफेयर एंड वर्किंग आवर्स फॉर एडल्ट वर्कर से तीनटा चैप्टर हमर हाईली एसेंशियल ए तीनटा चैप्टर हमें पढिबा और हमें ट्राई करबा जल्दी क्विकली कंप्लीट करबा पे कारण हमर बहुत सारा एक्ट गदा है छी पूरा एकदम से Hela, chalontu. Thank you. Bye bye. Good night. Thank you. गुड नाइट मैम Good night.